students. How are you all? I hope you all are fine. So, my dear students, today we are going to start a new topic, a new chapter, that is the subject and the predicate. This is the chapter number 4 in your October book. So, let's see what is subject and predicate. Any complete sentence has two main parts. Means all the sentence which we are speaking, it has two parts, the subject and the predicate. Subject वो जो बोल रहा है, the main person, and predicate is that which we do the prediction कि क्या होने वाला है. See here, subject. The subject of a sentence is simply what the sentence is about. सेंटेंस किसके ऊपर है. इट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट. वो हमेशा प्रेडिकेट से पहले आता है. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर दिस सेंटेंस, रविंदर कलेक्ट्स स्टेम्स. रविंदर इज हु? रविंदर इज द सब्जेक्ट हेयर. वो क्या कर रहा है? ही कलेक्ट्स स्टेम्स इज द प्रेडिकेट. कि रविंदर कुछ भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कलेक्ट स्टेम्स. हम लिख सकते हैं रविंद्र वेंट टू द पार्क. रविंद्र इज़ लर्निंग समथिंग. ठीक है, कुछ भी हम प्रेडिकेट से कर सकते हैं. बट रविंद्र सब्जेक्ट शुड बी देयर. ठीक है ना, रविंद्र सब्जेक्ट है. द सेंटेंस इज अबाउट अ पर्सन विद एन हॉबी. रविंद्र इज देयरफॉर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. Here is another example. My friend's mother seems restless this morning. What is the sentence about? It is about my friend's mother. Mother is therefore the subject of the sentence. Now see the predicate. The predicate is the part of sentence that make a statement about the subject. जो statement subject के according बनाई जाती है, that is called predicate. The main part of the predicate is the verb. जो main part होता है predicate का, वो होता है verb. The predicate usually comes after the subject. वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है. वंस यू फाइंड द सब्जेक्ट यू कैन ईजिली फाइंड द प्रेडिकेट. अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा तो आपको प्रेडिकेट नेचुरली मिल जाएगा. जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट द सेंटेंस इज टेलिंग यू अबाउट द सब्जेक्ट. वी शुड सी व्हाट्स द सब्जेक्ट इज टेलिंग अबाउट. ठीक है, व्हाट द सब्जेक्ट इज एंड व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेडिकेट अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट माइट टेल यू व्हाट द सब्जेक्ट डिड, डज, विल डू. Let's take another look at our first example. Ravindra collects stamps. In this sentence, as we know, the subject is Ravindra. The predicate collects stamps tell us what Ravindra does. Yes, Ravindra क्या कर रहा है? The verb here is the action verb collects. The predicate may be a single word as well. Predicate single word भी हो सकता है. जैसे कि for example, Rohit sneezed. अब रोहित इज व्हाट? सब्जेक्ट. एंड सीज वो क्या कर रहा है? स्नीज्ड, दैट इज प्रेडिकेट. इन द फॉलोइंग केसेस द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब. मोस्टली वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट आता है इन सिचुएशंस में. इन मैनी क्वेश्चंस एग्जाम्पल, आर यू रेडी? आर इज व्हाट? वर्ब. वर्ब के बाद क्या आया? सब्जेक्ट. यू. मोस्टली वर्ब के बाद जब सब्जेक्ट आता है कुछ केसेस में, तो लाइक इन अ क्वेश्चन फॉर्म. अब इसमें देखो, डिड आई फॉरगेट टू डू माई होमवर्क. ठीक है, डिड इज व्हाट? वर्ब. एंड उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई. इन मेनी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर और देयर. हेयर कम्स द जूरी. अब कम्स द जूरी. जूरी इज व्हाट? जूरी इज द सब्जेक्ट हेयर बिकॉज ये वर्ब के बाद आया है कुछ केसेस में. There were two parrots in the cage. So were is what? Were is the verb and the subject is two parrots. In some sentence beginning with one or more prepositional phrases, across the clearing and through the stream ran the frightened deer. Through the open window came the pigeon. So these are the some examples where the subject comes after the verb. Now let's see the exercises. First, see identify subject and predicate
in the following sentence and write them in the space provided. See here, Aksham has learned his lesson already. Aksham is what? Yes, Aksham is the subject, and जो आगे हम predicate कर रहे हैं, जो verb start हो गया है, that is has learned his lesson already is the predicate. Like this in all sentences it is predicate. One exceptional सेंटेंस इज व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक. ये क्वेश्चन फॉर्म में आ गया, और ये मैंने आपको बताई था कि जब वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट. अब वर्ब क्या है? विल. तो विल के बाद सब्जेक्ट क्या है? यू. तो यू इज़ द सब्जेक्ट हियर, एंड व्हेन विल रिटर्न माई बुक इज़ द प्रेडिकेट हियर. ठीक है, अदर्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टूड. Now next is B. Underline the subject in each sentence. It is also very much clear and easy. You can come to our house anytime. You is the subject, and second Sudhir is the subject because after verbs are there. Here in the third sentence, Moon is the subject, Mrs. Gupta is the subject, lunch is in sixth, fifth, and in the sixth, the tired old man is sitting under the tree. The tired old man is subject here. Seventh, we went to Agra to see the Taj Mahal. We is the subject here. A large number of swimmers are the subject here. Ninth, the carpenter is the subject here. 10th, people really need to stop making. So people is the subject here. See, underline the predicate in each sentence. The bird feather were long and colorful. तो birds की feather कैसी हैं? were long and colorful. तो word long and colorful is the predicate. The wild cat hopped across the path. Hopped across the path is the predicate. The beggar is very angry. Beggar क्या है? Is very angry is the predicate. Now see the next one. Jeetu and Neetu work hard for his exam. Work hard for his exam is the predicate. ठीक है, like this it is very easy to find out the subject and predicate. Now I think you all have understood this chapter, so do this exercise by yourself first, then match the answer key of mind with your answers. Okay, thank you, have a nice day.